أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. I welcome you all in the online session of electrical machines, power generation course. Today the topic of our lecture is magneto-hydrodynamic power generation. This is one of the basic technique to generate electricity for a small power plant. Magneto-hydrodynamic power plant dynamic power generation, or also known as the magneto-hydrodynamic power generation, is a direct energy conversion system which converts the heat energy directly into electrical energy without any intermediate mechanical energy of conversion. That means like a conventional steam system generator to run turbine, and turbine then rotate generator, and then generator produce electricity to provide it to transformer, and from transformer the electricity would be intake in the inlet in the national grid. So there is a prevention of mechanical energy conversion of intermediate stage from the magneto hydrodynamic power generation system. So this is a simple concept that directly convert electricity of heat into electrical energy. This is the simplest way to generate electricity. As opposed to this case in all other power generating plants, therefore, in this process, substantial fuel economy can be achieved due to elimination of the link process of producing mechanical energy and then again converting it to electrical energy. So due to this action, the magneto-hydrodynamic power generation system provides a way of generating electricity directly from a fast-moving steam of ionized gases without the need for any moving mechanical part. In this phenomena, you can see that on which principle the magneto-hydrodynamic power generation would be formed or performed. There are three concepts of magnetic field and EMF induced voltage electric current, and in between that the motion of conductor plasma current would be formed, which means there is a magnetic field of north or south. In between them, there is an electrode of positive negative of electricity DC volt also out there, and in between them there is the ionized gas plasma has been passing through from it. Now moving towards the introduction of magneto-hydrodynamic power generation system principle is applied for generating power from coal-fired or reactor power plants. It is extracting the technology from the conventional power plant of thermal power generation. The magneto-hydrodynamic generator plant does not require any turbine and does not have any generator shaft. This is the main feature and the beauty of this power generation technique. So there is no kind of turbine and generator need to power generate electricity as compared to the conventional thermal power plant or hydropower plants or other kind of techniques of wind turbine, solar systems, and geothermal. This is the unique type of technique which can convert electricity by the principle of magneto hydrodynamic power generation system. In magneto hydrodynamic generator, the thermal energy in plasma, that is called hot ionized gas, is directly converted to electrical energy without intermediate conversion of mechanical shaft energy. On which principle it works? The principle of magneto hydrodynamic power generation is a very simple and based on Faraday's law of electromagnetic induction. And can anybody tell me what is Faraday's law of electromagnetic induction?
According to Faraday's law, if a coil plays in a magnetic field, and if we want to move a magnetic if we want to move a coil in a magnetic field, then the induced EMF would be performed in that particular coil. That induced EMF is produced and it cause of oppose the direction of its protection. By instance of Lenz's law, we can explain this thing, which states that when a conductor and the magnetic field moves relative to each other, then voltage induced in that conductor, particularly we called, or I called, at as induced EMF in the conductor, which produce in a coil, which result in flow of current across the terminals. In conventional generator or alternator, the conductor consists of copper windings or strips, while in an magneto-hydrodynamic generator, that hot ionized gas or conducting fuel replaces the solid conductor. The magneto-hydrodynamics generator is concerned with the flow of conducting fluid in the presence of magnetic and electric fields. Now, the principle of magneto-hydrodynamic power generation is that when an electric conductor moves across a magnetic field, a voltage is induced in it, which produces an electric current. This is the principle of conventional generator, where the conductor consists of copper strips. In magneto-hydrodynamic dynamo generator, the solid conductor are replaced by a gaseous conductor. This is the unique thing in MHD generator. A solid conductor replaced by a gaseous generator. And these gaseous generator are polarized by positive and negative ions. An ions gas, if such a gas is passed at high velocity through a powerful magnetic field, in the previous slide I have show you guys that how a magnetic field north and south pole of permanent magnet placed out there, and the current is generated and can be extracted by placing electrodes in suitable position in the steam. The principle can be explained as follows. An electric conductor moving through a magnetic field experiences a retarding force as well as an induced electric field and current. So, in the principle of Faraday's or electromagnetic induction, when an electric conductor move across a magnetic field, an EMF is induced in it, which produce an electric current, which means a fluid of plasma going through from this side, and the magnetic field provide from this side and this side, or electricity produced from this side, the current flow would be happen. So again, the working principle continue. The magneto-hydrodynamic generator can be considered to be a fluid dynamo. This is similar to the mechanical dynamo, in which the motion of metal conductor through a magnetic field creates a current in the conductor, except that in the magneto-hydrodynamic generator, the metal conductor is replaced by a conducting gas plasma. So there is, in the MHD generator, there is not a solid conductor, there is a conductor of gaseous conductor. When a conductor moves through a magnetic field, it creates an electrical field perpendicular to the magnetic field and the direction of movement of the conductor. This is the principle discovered by Michael Faraday. Behind the conventional, the principle discovered by Michael Faraday, behind the conventional rotatory electric generator, Dutch physicist Anton
Lorentz provide the mathematical theory to quantify its effect. Further principle explain of magnetohydrodynamic dynamo generator power generation that flow of plasma gases from this side. Michael Faraday induction would be happen in this side where the magnetism provide from this side of north south pole. The electricity would be happen to extract from this side. Further description of effect of resulting of Faraday's law of electromagnetic induction. The induced EMF is given by E induced equal to U into B, where U is the velocity of conductor and B is the magnetic field or magnetic flux density and intensity. We can also sort this, but magnetic field intensity is represented by H. B categorically we studied B as magnetic flux density. The induced current is given by J induce C into induce EMF, where C is the electric conductivity. The retarding force on the conductor is Lorentz force, which we already studied in EMFT also, given by find J is the induced current multiplied by the magnetic flux density B and equal to the Lorentz induced force equation. The conducting fuel is force between the plates with a kinetic energy and pressure differential sufficient to overcome the magnetic induction force find. The end view drawing illustrates the construction of the flow channel. An ionized gas is employed as a conducting fluid. Ionization is produced either by thermal means, as an example, by an elevated temperature or by seeding with substance like cesium or potassium vapors which ionize at relatively low temperatures. The atoms of seed element splits of electrons. The presence of the negatively charged electrons make the gas an electrical conductor. Now again, the principle of cyclic process in hydrodynamic power generation that the compressor of WC provides supply to the heat exchanger on the site to generate electricity from the MHD generator to feed the load. Particularly the remaining output of generator that which produce the loss from this site again provide to the cooler to the plasma gases and again inlet to the compressor to continue the cyclic process. Up till now, any one of you, if have any kind of question or query, please feel free to ask. Otherwise, I continue the session in the same stream. Again, yes, सर yes. सर प्लीज आप उस पे जाइएगा ड्राइंग पे। सर ये जो है जनरेटर जो है ये हमें रिसाइकल दोबारा कर रहा है कूलर के पास। इन्होंने वो कूलर को इन्होंने थ्रो करिए जो हमारी बची हुई जो एक्स्ट्रा जो चीज थी इलेक्ट्रिक थी जनरेशन थी उसको इन्होंने कूलर के पास भेज दिया फिर ये रिसाइकल हो रहे हैं। तो सर इसमें इनपुट बेसिकली कहाँ से हो रहा है? पहली चीज़ तो ये यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी नहीं जा रही। असल में जनरेटर का मकसद सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करना नहीं है यहाँ पे। ये हमारा जो मैग्नेटो हाइड्रो एम एच डी का जो जनरेटर है वो इस्तेमाल हो रहा है। ये काम करता है मैग्नेटो हाइड्रोडायनामिक। जी डायनामिक डायनामो जनरेटर जो हमारा होता है, बिल्कुल ये काम करता है एक प्रिंसिपल के ऊपर जिसके ऊपर साथ ही साथ एक मैग्नेटिक फील्ड का कॉन्सेप्ट भी होता है और इलेक्ट्रिसिटी भी प्रोड्यूस से होती है। तो हम एक प्लाज्मा गैस को यहाँ से गुजारते हैं। प्लाज्मा गैस यहाँ से होती हुई जब वो एक्सट्रैक्ट होके या रीयूज होने के लिए यहाँ से निकलती तो वो ये जाती है और इलेक्ट्रिसिटी जो यहाँ से प्रोड्यूस हो रही है यहाँ और यहाँ
पॉजिटिव और नेगेटिव कह सकते हैं आप इसको, वो यहाँ पे लोड को ड्राइव करती है, और जो प्लाज्मा रिमेनिंग गैस रह जाती है रीयूज के लिए, उसे कूलर के ज़रिए से ठंडा करके हम कंप्रेसर से गुजारते हैं। वो प्रेशराइज प्लाज्मा गैस अगेन कंप्रेसर के ज़रिए बनाई जाती है, हीट एक्सचेंजर के अंदर या हीटर के अंदर उसे डाला जाता है, और उसको दोबारा से प्रेशराइज प्लाज्मा गैस जनरेटर से गुजारा जाता है। और अगेन एंड अगेन रिपीटेशन साइक्लिक प्रोसेस में एमएचडी जनरेटर का जो प्रोसेस है इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करके हमें प्रोवाइड करता है, लेकिन ये छोटे यूनिट्स में इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहा होता है, जो वॉट्स या किलोवाट की रेंज में है। ये बहुत ज़्यादा एक्सटेंसिव अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के लिए इस्तेमाल नहीं हो सकता। यहाँ तक और कोई डिफ़िकल्टी किसी के जहन में है तो पूछ लीजिए, या कोई सवाल है तो वो पूछ लीजिए। So hopefully there is no kind of question. So I continue the session with the same stream. Further working principle of this process, the flow motion of the conducting plasma through a magnetic field causes a voltage to be generated and an associated current to flow across the plasma perpendicular to both the plasma flow and the magnetic field according to फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल हमें ये बताता है कि जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है वो फिंगर की डायरेक्शन है, और करंट की डायरेक्शन थंब की डायरेक्शन कहलाती है। दिस इज द फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल विच वी ऑल्सो रीड एंड स्टडी इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड थ्योरी कोर्स। Lorentz law, that is also I teach students that what is the concept of Lorentz force equation, Lorentz force law in EMFT course, describing the effects of charged particle moving in constant magnetic field can be stated as the F is equal to QVB and QVB sine theta, where F is the force acting on the charged particle, Q is the itself charged particle, V is the velocity of particle, and B is the magnetic flux density, not field intensity. B is the magnetic flux density. These are the concept of working principle. Further, that the plasma conductor that flow and act as a fuel in MGHT generator. A pressurized electrically conducting fluid flows through a transverse magnetic field in a channel or duct. Pair of electrodes are located on the channel walls at right angle to the magnetic field and connected through an external circuit to deliver power to a load connected to it. Electrodes in MHD generator perform the same function as brushes. That is one of the basic course of electrical generation and the concept of machine. I teach also even a course of electrical machines. For knowledge purpose, I am recommend you guys to also seen those lectures to clear your concept regarding motor, especially AC motor, DC motor, generator. Specifically, I also conduct a lecture on synchronous generator in today's date, and the concept of what is the concept of brush, slip ring, motors, generator. I also now these days teaching in electrical machine online lectures. So to clear your concept regarding brushes, slip rings, commutator, you have to see or plan to seeing these things. So the concept of brushes, commutators, slip rings have been clear in your mind. So it's a simple suggestion for your guys, for you guys. So continue the session with the same stream as brushes in a conventional DC generator. So conventional DC generator is a type of generator in which electricity produced, and we extract the output uh, either by the alternator as well, by the dynamo as well. That particularly concept have been installed or uh, applicable in the car alternator. The MHD generator develops DC power, and the conversion of AC is done using an inverter. So if uh, remember this thing,
that the MHD generator develop DC current power, and all our appliances and household equipment work on AC current. So we have to convert that particular generating MDH generator current of DC into AC. And how we convert DC into AC? चल इन्वर्टर. By inverter. Inverter is a particular type of device which convert your DC current into AC current. Can you tell me the, and can anybody of you can tell me the concept that how inverter convert that particular DC current into AC current? What's the principle on which it works? सर थ्रू बेसिकली सर थ्रू पावर सप्लाई ऑफ डीसी, जिसके अंदर ब्रिज भी लगा हुआ होता है, और फिर हम उसको एसी में कन्वर्ट कर रहे होते हैं थ्रू. सर देखिए, ये जो आप बता रहे हैं इससे कन्वर्ट होता है एसी से डीसी। मैं पूछ रहा हूँ डीसी से एसी कैसे कन्वर्ट होता है? इसमें पावर सप्लाई नहीं लगती है। पावर सप्लाई का कॉन्सेप्ट है एसी से डीसी बनाने का। मैं पूछ रहा हूँ डीसी से एसी बनाने का कॉन्सेप्ट। जी, एनी वन ऑफ यू कैन टेल मी द कॉन्सेप्ट दैट हाउ वी कन्वर्ट डीसी इंटू एसी बाय द फिनोमेना ऑफ इन्वर्टर? ये तो हम बहुत आसानी से कह देते हैं कि भाई इन्वर्टर लगा देंगे तो डीसी से एसी कन्वर्ट हो जाएगा। बैटरी हमारे पास है, अगर हमें उसे कन्वर्ट करना है तो इन्वर्टर लगाते हैं और एसी उससे बन जाता है। बट हाउ इन्वर्टर प्रोड्यूस और कन्वर्ट डीसी करंट इनटू एसी करंट? व्हाट्स द मेन स्ट्रीम कॉन्सेप्ट दैट in behind the inverter, how it convert the DC current into AC current? Can anybody of you can tell me what's and how can we convert it? Okay, I am tell you. The high switching MOSFETs और जो कंट्रोलिंग फिनोमेना होते हैं हमारे ट्रायोड्स हो गए हमारे, या हमारे जो हाई स्विचिंग MOSFETs होते हैं, मॉक्स होते हैं, वो इन्वॉल्व होते हैं इसमें। और अगर सिंगल फेस का आप बनाना चाहते हैं एक एसी इन्वर्टर, डीसी टू एसी करना चाहते हैं, तो उसमें जो ये हाई स्विचिंग मॉसफेट लगेंगे सिंगल फेस के, वो 4 स्विच लगते हैं। और उन 4 स्विच के जो मॉसफेट्स होते हैं, मॉसफेट में हम इस्तेमाल करते हैं गेट ड्रेन स्विच सोर्स को। तो जो गेट्स होते हैं उनको पल्सेस प्रोवाइड की जाती हैं कंट्रोलर के ज़रिए इन मिली सेकेंड्स एंड माइक्रो सेकेंड, एंड पर्टिकुलरली उनके ज़रिए से सिग्नल हमारा फुलफिल हो रहा होता है। और जो इन्वर्टर से हमें साइनोसाइड वेव मिलती है वो कॉजी साइनोसाइड्स होती है, और उसको स्मूथ बनाया जाता है उसके बाद। और सिंगल फेस में प्रिंसिपल फॉलो होता है, 3 फेस के अंदर हम अपने सिग्नल को कन्वर्ट करते हैं डीसी टू एसी बाय 6 मॉसफेट्स। तो 3 फेज में हमारे 6 मॉसफेट लगते हैं, सिंगल फेस में हमारे 4 मॉसफेट लगते हैं। तो जब आप पावर टर्न्स का कोर्स इंशाल्लाह पढ़ लेंगे तो आपको ये चीज़ें भी क्लियर हो जाएंगी। तो ये छोटा सा एक इंफॉर्मेशन थी दैट हाउ वी कन्वर्ट डीसी करंट इनटू एसी करंट बाय इन्वर्टर डिवाइस। Hopefully all the things have been clear you guys up till now. If you have any kind of question or query, please ask. Otherwise, I continue the session with the same stream. Okay. The MHD system, MHD power generation has also been studied as a method for extracting electrical power from nuclear reactors, and also from more conventional fuel combustion systems. Combustion systems हम उन्हें कहते हैं जिनमें फ्यूल को जलाकर इलेक्ट्रिसिटी पैदा की जाती है, और ये थर्मल पावर सिस्टम भी हमारे उन प्रिंसिपल पे काम करते हैं। The MHD generator needs a high temperature gas source which could be coolant from the nuclear reactor. न्यूक्लियर रिएक्टर में कूलिंग मैकेनिज्म बहुत अच्छा लगा होता है, तो हमने वहाँ से इसकी प्रेफरेंस को हासिल किया है। और मोर लाइकली हाई टेम्परेचर combustion gases generated by burning fossil fuels, including coal, in the combustion chamber. MHD system, that magneto hydrodynamic electricity generating system, that how it works. First we have to inlet the fuel in combustion chamber with the need of air। combustion chamber में
फ्यूल तो डल जाता है, लेकिन एयर लगाने की वजह ये होती है ताकि फ्यूल को कम इस्तेमाल किया जा सके और हवा के इस्तेमाल से हम सिस्टम को अच्छी तरह से यूटिलाइज कर सकें। एयर जो है ब्लोअर का काम देती है, आग को भड़काती है कंबशन चैम्बर में। तो इस तरीके से हमारा फ्यूल कम इस्तेमाल होता है और एयर को एज अ फ्यूल हम इस्तेमाल कर लेते हैं, क्योंकि कंबशन में एयर आपके फ्यूल की आधी मकदार कर देता है और एयर भी एज अ फ्यूल इस्तेमाल होती है, ब्लोइंग एयर। आयनाइज गैस जनरेटर यहाँ से आयनाइज गैस जनरेटर प्रोड्यूस करता है जो कि एक्सपेंशन नोजल से निकलती है। एमएचडी जनरेटर यहाँ लगा होता है जिसके अंदर आपका नॉर्थ और साउथ पोल बना हुआ होता है और इन बिटवीन जैसे यहाँ और उस तरफ आपका नॉर्थ साउथ पोल मैग्नेटिज्म बना होता है और राइट टॉप एंड मोस्ट बॉटम के अंदर आपके डीसी इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस हो रहा होता है। अब ये डीसी इलेक्ट्रिक करंट जब प्रोड्यूस हो रहा होता है, अभी थोड़ी देर पहले हमने ये कॉन्सेप्ट हैव बीन डिस्कस दैट टू कन्वर्ट दैट पर्टिकुलर डीसी इनटू एसी बाय इन्वर्टर डिवाइस। Further, the exhaust gases that release from MHD generator from the ionized gas, the exhaust gases have been released from this side in the heat exchanger chamber. Further, heat exhaust gases, the normative gases that have to utilize in the environment, also release in the side. The air also inlet to pressurize these heat exchange gases that again reused to the compressor. By this way, the cyclic process further continue. That also mentioned in this figure. Open cycle using conventional fuel. That how MHD generator produce electricity. Now moving towards the next concept of MHD system, the expansion of nozzle reduces the gas pressure and consequently increase the plasma speed that tells by the Bernoulli law. Bernoulli we already studied in most of our calculus and differential equations concept. The liquid fuel uh, fluid dynamics and liquid dynamics also studied in Bernoulli equations in differential equations and calculus analytical geometry kind of courses. You already studied there the kind of concepts. So the generator conduct to increase the power output. The fluid dynamics and the aerodynamics also studied by the Bernoulli law of equation. The plasma gas act like a Bernoulli equation. Unfortunately, at the same time, the pressure drop caused the plasma temperature to fall. Gray-Lutz's law, which also increased the plasma resistance. So, a compromises between the Bernoulli and Gay-Lussac must be found there. The exhaust heat from the working fluid is used to drive a compressor to increase the fuel combustion rate, but much of the heat will be wastage unless it can be used in another process. Now moving toward the fuel of MHD generator that we called or the plasma. These are the gases. The prime MHD system requirement is creating and managing the conducting gas plasma, since the system depends on the plasma having a high electrical conductivity. The plasma can be likened to the fourth stage of matter. We all know this thing. Matter having three stages, commonly we know that solid, liquid, and gas, and plasma is the fourth stage of matter. Fourth state of matter after the solid, liquid, and gaseous states, in which the atoms of molecules are stripped of their electrons, leaving positively charged ions. Suitable working fluids are gases derived from combustion, noble gases, and alkali metal vapors. Further, the gas plasma moving towards after plasma. To achieve high conductivity, the gas must be ionized by detaching the electrons from the atoms or molecules leaving the positively charged plasma.
The plasma flows through the magnetic field at high speed. This is most important concept, that plasma flows through the magnetic field in high speed. In some designs, more than the speed of sound. The flow of positively charged particles providing the moving electrical conductor necessary for including inducing a current in the external electrical circuit. Now moving toward the method of ionizing the gas, which I am escaping here, it is not important. The Faraday current is important part, so we have to read this thing. A powerful electromagnetic provides the magnetic field, that is the right and left side of MHD generator, which we already seen in our previous slides. So through which the plasma flows, because due to the north and south pole, which is right and left side of MHD generator, the strong magnetism is produced in between the magnetic magnetic field. So we need the strong magnet, that should be permanent magnet or electromagnet, either it is. In the perpendicular to this field are installed the two electrodes on opposite sides of plasma. Across each of electrical output voltage is generated. The current flowing across the plasma between these electrodes is called Faraday's current, which is in flowing from the plasma. This provides the main electrical output of the MHD generator, which we already seen in our previous slides. Now there is a Hall effect current also produce a very high Faraday output current, which flows across the plasma duct into the load itself, reacts with the applied magnetic field, creating a Hall effect. Current perpendicular to the Faraday's current, in other words, the current along the axis of plasma, resulting in lost energy. A total current generated will be vector sum of transverse Faraday and axial Hall effect. So there is a concept of Hall effect also available there. By the magnetic leviation, electric current would be produced. Current components, unless it can be captured in some way, the Hall effect current will constitute an energy loss. So we have to reduce the loss by Hall effect. So there's some kind of provision should be there. Up till now, any one of you have, if any kind of question or query, please feel free to ask. I will answer your question and resolve your query. So this would be our last slide of today's lecture. So we have to read it and end today's PG lecture. To improve the overall MHD conversion efficiency, one method is to split the electrode pair into series of segments physically side by side parallel, but insulated from each other, with the segmented electrode pairs connected in series to achieve a high voltage but with lower current. Instead of the electrode being directly opposite each other perpendicular each other perpendicular to the plasma stream, they are skewed at the slight angle from perpendicular to be in line with the vector sum of the Faraday's and Hall's back current as shown in the diagram below, thus allowing the maximum energy to extract it from the plasma, which is shown in this figure by the multiple paths of side-by-side insulator spacer are available here and there. The further electricity in the chunks would be performed in this way due to the segment deviation. The Faraday's law Hall effect electric field would in this plane, and the motion would be form of plasma gas would be side, field would be produced from in this side, and from this side electromotive force and load current would be formed. This is the segmented Faraday's
generator concept, but I have to tell you guys at this state that this is a small generating electricity power plant. It is not commercially used as compared to the conventional thermal power plant, hydropower plant, solar and wind turbine, or geothermal. It is a small category of power plant in which electricity could be produced, and it is a kind of technique by which we produce electricity by magneto-hydrodynamic power plant by uh, plasma gas to produce electricity directly. It is a simple method, but it is not used for commercial purpose to generate electricity. Remember this thing. Up till now, if you have any kind of question, please feel free to discuss. सर Yes, सर हम जैसा आपने भी बताया है कि हम इसे कमर्शियली तौर पे यूज नहीं कर सकते, लाइक अ सोलर विंड वगैरह। yes. और हम इसे और हम इसे जनरेटिंग साइड पे हम इसको यूज कर सकते हैं, लेकिन ये काफी ज्यादा उसमें हमें मेगा में हमें पावर नहीं दे सकता, वोल्टेज नहीं दे सकता, इलेक्ट्रिसिटी नहीं दे सकता। तो सर हम फिर इसे यूटिलाइज क्यों कर रहे हैं जब हम इससे ज्यादा पावर नहीं ले सकते। अच्छा, इसके दो जवाब हैं इस बात के। तो पहली चीज़ तो ये है कि इलेक्ट्रिसिटी जो इससे पैदा हो रही है वो छोटे यूनिट पे तो पैदा होगी, जिससे हम एक छोटे स्केल के ऊपर एक छोटे से कमर्शियल एक कारखाने को चला सकते हैं, कुछ घरों को चला सकते हैं। उसके लिए तो ये फुलफिलमेंट है। और दूसरा ये टेक्नोलॉजी की एडवांसमेंट का कुछ हमें पता नहीं होता कि कितनी एक्सटेंड हो। तीसरा मकसद इसका ये है कि हम पढ़ रहे हैं पावर जनरेशन, तो वो सारे तरीके हमें सीखने की ज़रूरत है जिन जिन तरीक़ों से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो सकती है। उस मकसद को फुलफ़िल करने के लिए हमें ये चीज़ सिखाई और बताई जा रही है, ताकि हम जो एवोल्यूशन ऑफ टेक्नोलॉजी है उसके साथ चलें। बाज़ औक़ात ऐसा होता है जिस तरह से हार्ड प्रोजेक्ट्स हो गए या जो हमारे दीगर टेक्नोलॉजी की एडवांसमेंट हो रही है, उसमें 3-4 हाइब्रिड टेक्नोलॉजी को मिलाकर एक ऐसी टेक्नोलॉजी का एवोल्यूशन किया जाता है जिसके नतीजे में हमें आउटब्रेक्स किस्म के रिजल्ट्स मिलते हैं, और उससे हम इमेजिन नहीं कर पाते कि ये किस तरीके से आगे टेक्नोलॉजी ट्रेंड की है। तो इसीलिए हमें टेक्नोलॉजी को सीखने की ज़रूरत है, समझने की ज़रूरत है, क्योंकि हाइब्रिड टेक्नोलॉजी का दौर है जिसमें हम बहुत सारी टेक्नोलॉजी और एवोल्यूशन को इस्तेमाल करते हुए नई टेक्नोलॉजी को ड्राइव करते हैं, और होपफुली क्या पता आगे चल के ये एक बड़ा रिजल्ट भी हमें दे दे दीगर टेक्नोलॉजी के साथ मिलके। सर एक सवाल और है। जी, जी। सर सवाल ये है कि जिस तरीके से हम न्यूक्लियर पावर प्लांट है हमारा, जी, जी। और दूसरे दूसरे जनरेशन साइड है हमारी, वहां से हम बिजली जब हम जनरेट करते हैं तो वो हमें महंगी पड़ती है। जी, जस्ट जस्ट लाइक एमएचडी। तो एमएचडी क्योंकि छोटे लेवल पे हम बिजली को जनरेट कर रहे हैं, एक छोटे एरियाज के लिहाज से, तो सर इसकी क्या कॉस्ट आएगी? आया कि ये उनसे ज्यादा महंगा पड़ेगा हमें या उनसे सस्ता पड़ेगा? अ, ये उनसे सस्ता पड़ेगा, लेकिन देखें एक चीज़ हमेशा याद रखें, जब हम एक चीज़ इस्तेमाल कर रहे हैं, ख़ास तौर पे यूटिलिटी ऑफ इलेक्ट्रिक से ले रहे हैं या हैस्को हैपको से इलेक्ट्रिसिटी ले रहे हैं, तो वो हम उसके डेली यूज़ के लिए जो है तैयार हैं। लेकिन कोई इस तरह की टेक्नोलॉजी जो हम अगर अपने घर में लगा लेते हैं, तो उसमें हमें प्लाज्मा फ्यूल रिक्वायर्ड होगा, फिर उसका इक्विपमेंट एक्सपेंसिव बैठेगा। ये बिल्कुल ऐसे ही कि एक पावर प्लांट घर पे लगा रहे हैं हम अपने, तो वो इतना आसान नहीं होगा, और वो सेव भी नहीं हो सकता, क्योंकि इसकी ज़रा से भी सेट पॉइंट्स बिगड़ गए तो ये धमाके से उड़ भी सकता है। तो सेट पॉइंट मेंटेन करना ज़रूरी है, और ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं। ये एक असल में ये एक टेक्नोलॉजी ऑफ स्पेस टेक्नोलॉजी से ड्राइव होकर हम तक पहुंची, जिससे हमें अंदाज़ा हुआ कि इलेक्ट्रिसिटी इस तरह भी जनरेट हो सकती है। ऑब्वियसली ये कन्वेंशनल थर्मल पावर प्लांट या दीगर पावर प्लांट सस्ता ज़रूर है, लेकिन हम इसको घर के लिए रीयूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि ये इलेक्ट्रिसिटी हम अपने पावर प्लांट से पैदा करेंगे तो हमें बहुत महंगी बैठेगी इसके बनस्बत अगर हम एक यूटिलिटी से इलेक्ट्रिसिटी खरीदें। अच्छा, ये सेशन ख़त्म होने में लेस देन अ मिनट रह गए। कोई मज़ीद सवाल किसी का है तो पूछ लीजिए, अदरवाइज़ ये सेशन फिर यहाँ पे एंड हो जाएगा। और आज के सेशन की अटेंडेंस जो ये वाली है ऑफिशियल व्हाट्सएप ग्रुप पे प्लीज़ शेयर कर दीजिए।